आखिरी शो था और इसके बाद वो कोई शो नहीं करेंगे। इंतहाई बासलाहियत नौजवान हैं और तरह तरह के मसाइल जो हैं उनके प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते थे और बड़ी बड़ी शख्सियात को वो यहाँ मद्दू करते थे। उनका एक अपना अंदाज़ था, उनका अपना एक स्टाइल था जो कि मैं महसूस करता हूँ किसी भी रेडियो स्टेशन के लिए बहुत बड़ा असासा है। बहरकैफ वजूहात से मुझे बखूबी इल्म नहीं है। बहरकैफ वो मसरूफ़ इंसान हैं, सियासतदान हैं, समाजी कारकुन हैं और बहुत से कामों में सरगर्म है, बल्कि यूनियन के भी नुमाइंदे हैं और उनकी मसरूफियत को समझते हुए मैं समझता हूँ कि शायद यही मसरूफियात इस प्रोग्राम को खैरबाद कहने की वजह बनी हों। बरकैफ वो जहाँ भी जाएं शाद रहें, आबाद रहें और गमों से आज़ाद रहें। मुझे यकीन है कि आप सब सामीन और नाजरीन की दुआएं उनके साथ हैं और मेरी उन्हें दावत है, बल्कि पुरज़ोर गुजारिश है कि वे मेरे जो प्रोग्राम होते हैं फ़िटनेस के उनमें वो तशरीफ़ लाएं और उनमें हिस्सा लेकर मज़ीद मुतहर्रिक हों। नासिर रऊफ़ के लिए नेक ख्वाहिशात और नेक दुआओं के साथ मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आप जहाँ कहीं भी हैं, दुनिया के जिस भी खिते में हैं, आप हमारा ये प्रोग्राम समाअत फरमा रहे हैं या देख रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप खुश होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे और गमों से आज़ाद होंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हस्ब आदत हस्ब मामूल अल्लाह के मुबारक नाम से शुरू करना चाहता हूँ। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो सारे जहानों का मालिक है, खालिक है, राज़िक है, रहीम है, करीम है, गफूर है। उसके बाद दुरूद हो ऊपर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कि इमामुल अंबिया हैं, खातमुल नबीयीन हैं और इमाम उल अंबिया के साथ साथ रहमतुल लिल आलमीन भी हैं। सामीन और नाज़रीन अज़ीज़ वकार, अपने प्रोग्राम का जो हिस्सा ख़बरों का है उसका आगाज़ करते हैं और पहली ख़बरें मैं उर्दू में आपको सुनाना चाहता हूँ और ये ख़बरें जो हैं अखबार जंग पाकिस्तान से ली गई हैं। तालिबान का भारतीय एजेंट होने का एतराफ़, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए दुश्मनों से पैसे मिलते थे, तर्जमान तालिबान का एतराफ़ी बयान। एहसान ने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन एजेंसियों के मुखासमाना गैर मुल्की एजेंडे और अज़ाइम को बेनकाब कर दिया। $10 अरब की पेशकश, अखलाकी जुर्त है तो नाम बताएं। नून लीग शहबाज का करीबी था, इमरान सबूत दें। PPANP। एहसानुल्लाह की गिरफ्तारी से पाकिस्तान का केस मजबूत हुआ है। ऑपरेशन से तालिबान को रुसवाई का सामना करना पड़ा, हम बिग 3 पर भी तलाफी मांगेंगे। नजम सेठी। कश्मीर का मसला इक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करना होगा, ख्वाजा आसिफ। लैया, 5 बच्चों को जहर देने वाला बाप दम तोड़ गया। पेशकश करने वाला हमजा शहबाज का दोस्त है, इमरान खान।
ڈان لیکس رپورٹ پر حکومت میڈیا کھیل رہی ہے شیخ رشید عمران کا شہباز شریف پر الزام من گھڑت ہے حکومت پنجاب احسان اللہ احسان کو سخت سزا ملنی چاہیے اسفند یار ولی چین نے اپنے شہریوں کو اسرائیلی منصوبے میں کام کرنے سے روک دیا کراچی گلستان جوہر سے 4,500 گدوں کی کھالیں برآمد احسان اللہ نے غیر ملکی ایجنڈے سے پردہ اٹھایا ISPR مقبوضہ کشمیر میں بھارتی سیکیورٹی فورسز نے دختران ملت کی چیئرپرسن آسیہ اندرابی کو گرفتار کر لیا مقبوضہ کشمیر کپواڑہ میں بھارتی فوجی کیمپ پر حملہ 2 افسروں سمیت 5 فوجی ہلاک سیاسی پناہ کے نام پر مفادات بٹورنے والے پاکستانی جوڑے کو سزا پاکستان میں آزادی صحافت کی صورتحال میں خوشگوار بہتری اور بھارتی انتہا پسندوں کا پاکستان کے فرضی سیٹ پر حملہ مشال خان قتل کیس پولیس نے رپورٹ عدالت میں پیش کر دی مقبوضہ کشمیر دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت نے سوشل میڈیا پر 30 دنوں کے لیے پابندی لگا دی سامعین اور ناظرین عزیز وقار آپ سماعت فرما رہے ہیں ریڈیو ایمان 103.1 FM آپ کی آواز آپ کا انتخاب اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمان ٹی وی آن لائن اور میں ہوں آپ کا پیشکار آپ کا میزبان راجہ خوشنود خان اور پیش کرتا ہوں پروگرام مسئلہ کیا ہے ہر جمعرات شام 6 بجے تا 8 بجے Dear listeners, you're listening to Radio Iman 103.1 FM, your voice, your choice. And you're also viewing Iman TV online. And I'm your host, Raja Khushnood Khan. And I present the program called Masla Kia Hai. That is, what is the problem, what is the issue, every Thursday from 6 p.m. to 8 p.m. And now the news in English from BBC. UK could join US attack on Syria. Teen admits planning London bomb attack. Spurs fan attacked in Chelsea mix-up. Homicide and knife crime rates rising. Boy arrested in car theft murder probe.
Merkel warns UK on Brexit illusions. Bash Street Kids comic legend dies at 86. UK helps gay couples marry in Australia. Man jailed for killing friend with one punch following an argument about football. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, you are listening to Radio Iman 103.1 FM, your voice, your choice. And I'm your host, Raja Khushnood Khan. And you're also viewing Iman TV online. And I do the program, I present the program called Masla Kia Hai. That is, what is the problem, what is the issue, every Thursday from 6 p.m. to 8 p.m. And ladies and gentlemen, if you wish to contribute or criticize or say anything that is productive, then please join us. And to join us, the phone number is 0114 2425 200. And now the rest of the news. Men's Healthy Lunch Club took part in a health seminar at English Institute of Sport. There was good turnout from particularly Asian ladies from Darnall and Tinsley who participate in Darnall Wellbeing's activities. Men's Healthy Luncheon Club, which is part of Darnall Wellbeing, took part in their usual cardio exercises in a hall. Session ended with a buffet, tea, coffee and biscuits. And gentlemen, if you are unhealthy or if you wish to be even healthier, then you can participate in the sessions on Thursday, every Thursday, apart from Thursdays in school term, every Thursday from 12:30 to 1:30. And Men's Healthy Luncheon Club takes place at Starbucks, Darnall Road, Darnall. And you can come there and you will be exercising for half an hour and you will be trained by myself. I'm a fitness trainer. And then after that, you'll be fed with a nutritious meal for which you'll have to pay a nominal price of £1. And after that, you'll be participating in a talk, lecture, or discussion on a health issue. And as you know, ladies and gentlemen, exercises and calorie control diets are recommended by Public Health England, National Health Service, NHS, and your doctors. And the remainder of the news, Rotherham Friends Indeed, that is RFID, is providing a hot meal and dessert to its homeless guests on Saturday, the 29th of April 2017, between 5 and 6 p.m. at the Shiloh Centre, Station Road, Rotherham. Rotherham Friends Indeed, that is RFID, wish to congratulate their partners Shiloh for moving into their new premises, that is the old Weybridge on Station Road, Rotherham. And RFID wish to thank Mr. Imran Raseb of Let4U for sponsoring this week's meal. सामीन इसी वकार ये थी उर्दू और अंग्रेज़ी की खबरें और अगर
मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहें तो बड़ा आसान तरीका है आप हमारे साथ टेलीफोन पर राब्ता कायम कर सकते हैं और टेलीफोन पर राब्ता कायम करने के लिए मैं नंबर आपको बतला देता हूं हमारा नंबर है 0114 2425 200 मैं नंबर दोहराए देता हूं 0114 2425 200 और इस वक्त मैं अगर आपने तकनीकी जादूगर मेरी मुराद है हमारे ऑफिस मैनेजर शायद सबीर चौधरी साहब का जिक्र ना करूं और उनका शुक्रिया अदा ना करूं तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी वो मेरे प्रोग्राम की तैयारी में मेरी मदद फरमा रहे हैं और मैं हमेशा की तरह उनका शुक्रगुजार मशकूर ममनून और मकरूस हूं और सामीन और नाज़रीन ज़ीवकार मैं आपको आज का मौजू जो है इस ब्रेक के बाद बतलाऊंगा और मैं तब तक नहीं बतलाना चाहता जब तक हमारे मुस्तकिल मेहमान यहाँ तशरीफ़ ना ला सकें बल्कि हमारे ऑफिस में मुझे एक चिड़िया बतला रही है कि वो तशरीफ़ ला चुके हैं हाँ जी आपको हैरत होगी कि नजम सेठी की भी एक चिड़िया है और मेरी भी एक चिड़िया है और मेरी चिड़िया भी जो है अभी ज़ेर तरबियत है लिहाजा गलती का अमकान है लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि वो तशरीफ़ ला चुके हैं देखते हैं मेरी चिड़िया कहाँ तक तरबियत याफ्ता देखिए मेरे मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं अस्सलाम वालेकुम अहलन व सहलन मरहबा या अखी तशरीफ़ रखिए सामीन ज़ीवकार और नाज़रीन ज़ीवकार मेरी चिड़िया मैं समझता हूं कि नजम सेठी की चिड़िया का मुकाबला करने की पोजीशन तक पहुंच चुकी है मैंने कहा था कि मेरे मेहमान जो है मुझे मेरी चिड़िया बतला रही है कि वो तशरीफ़ ला चुके हैं और वाक़यातन जब मैं अल्फाज अदा कर रहा था वो जो है स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए और मेरी मुराद मेरे मेहमान से और आपके हर दिल अजीज़ भाई से चौधरी मोहम्मद साबिर साहब है जो कि सेक्रेटरी हैं जनाब अबू बकर मस्जिद ईस्टवुड रॉदरम के और बहुत ही सरगर्म और मुतहर्रिक कारकुन हैं और मैं सामीन और नाज़रीन ज़ीवकार उन्हें आपकी तरफ से अपनी जानिब से और रेडियो ईमान की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ खुशामदीद सर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम टू लिसनर्स एंड व्यूअर्स कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र आप ठीक से बहुत खूब बाहर अभी बारिश हो रही है या नहीं इट्स लवली वेदर आउटसाइड नाउ दैट्स व्हाई आई केम इन टी-शर्ट माशाल्लाह मैं जब आया था बारिश हो रही थी तो मैंने एक बड़ा भारी भरकम कोट पहना हुआ था लेकिन स्टूडियो में जो है दर्जा हरारत ज़रा ऊंचा ही रहता है और गर्मियों में तो हमें एसी की मावनत जो है वो दरकार रहती है और सामीन और नाज़रीन ज़ीवकार मावनत की बात कर रहा था और हमारे तकनीकी जादूगर एक बार फिर आए और उन्होंने कैमरास की पोजीशन जो है वो दुरुस्त की बहुत बहुत शुक्रिया उनका जनाब चौधरी साबिर साहब एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है बाद में मैं जो आज का मौजू है वो आपने सामीन और नाज़रीन ज़ीवकार से शेयर करूंगा लेकिन सामीन और नाज़रीन ज़ीवकार ये जो प्रोग्राम है हमेशा मैं कहता हूँ ये आपका अपना प्रोग्राम है ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है और हम आपके तमाम मसाइल जो हैं उन्हें ज़ेर बहस लाते हैं और हमारी कोशिश और काविश ये होती है कि हमारे प्रोग्राम जो हैं वो आगाही के ज़रिया और बातचीत के ज़रिया और सुलझे हुए तरीके से आपस में गुफ्तगू करके जो हमारे मसाइल हैं उनका हल ढूंढा जाए और जो मसाइल हैं उनमें इत्तेहाद कायम किया जाए ताकि हमारे मसाइल कम हों और वसाइल की दस्तयाबी जो है ज़्यादा वसाइल की दस्तयाबी वो मुमकिन हो ये तभी मुमकिन हो सकता है जब आप हमारी हौसला अफजाई करें और हौसला अफजाई के लिए आप जो है हमारी तारीफ़ कर सकते हैं या असलाह के लिए आप तनकीद कर सकते हैं तारीफ़ तनकीद तायद तज़किरा या तबसरा यानी मैं हमेशा कहता हूँ ते और उसके लिए फ़ोन जो है बड़ा ज़रूरी है और अगर आप हमारा प्रोग्राम पसंद करते हैं
तो आप फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हैं कि आप हमारा प्रोग्राम लाइक करते हैं और इंतहाई शुक्रगुजार मशकूर ममनून और मकरूज़ हूँ जनाब अपने सीईओ अलहाज मोहम्मद सबीर मूल साहब का जो कि हमारा प्रोग्राम पसंद फरमा रहे हैं और देख रहे हैं और अकाबी नज़रों से वो देख रहे हैं और समाअत फरमा रहे हैं अल्लाह का शुक्र है कि मैं होश की गोलियां खा आया मुझे मालूम था कि वो काबी निगाहों से हमारा प्रोग्राम समाअत फरमाएंगे और देखेंगे सामीन अज़ीज़ मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी देख रहे होंगे और समाअत फरमा रहे होंगे और अगर आप प्रोग्राम समाअत फरमा रहे हैं देख रहे हैं और इसे पसंद फरमा रहे हैं तो बराह करम फ़ोन करें ब्रेक के दौरान भी या ब्रेक के बाद चूँकि ये आपका अपना प्रोग्राम है ये आपका अपना रेडियो स्टेशन है और टेलीविज़न स्टेशन है और इसमें तभी बेहतरी आ सकती है तभी जो है आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो सकता है जब अपनी मर्ज़ी का इज़हार करें सामीन अज़ीज़ ब्रेक के और हमारे दरमियान बस चंद सेकंड रहते हैं मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश करूँगा कि आप फ़ोन करके अपने नज़रियात से अपने ख़यालात से हमें आगाह करें और सामीन और नाज़रीन अज़ीज़ हमारे कॉलर्स जिन ख़यालात और नज़रियात का इज़हार करते हैं या हमारे मेहमान जिन ख़यालात या नज़रियात का इज़हार करते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि रेडियो ईमान की इंतज़ामिया या ईमान टीवी ऑनलाइन उनसे इत्तेफ़ाक करे ये उनके अपने नज़रियात हैं उनके अपने ख़यालात हैं हम एक सहूलत है जो तरह तरह के ख़यालात और नज़रियात रखने वाले लोगों को मदऊ करते हैं ताकि किसी एक नुक्ता नज़र पे हम इत्तेफाक कर सकते हैं सामीन और नाज़रीन अज़ीज़ ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है मिलेंगे इस ब्रेक के उस पार इंशाअल्लाह This is your local community station Iman FM on 103.1 FM अस्सलाम वालेकुम मेरे बहनों और भाइयों मैं आपके लिए खूबसूरत प्रोग्राम लेकर आती हूं जिसका नाम है अकीदत के फूल विद शायदा रसूल आप सुनते हैं हर मंडे को 11:30 से 1:30 बजे तक सिर्फ ईमान एफएम पर Khan Solicitors, experienced criminal defence lawyers in defending your rights. We can assist you get the best possible outcome if you're involved in any criminal matters, including murder, drug offences, sexual offences including grooming, terrorism, fraud and money laundering. We can provide free advice and assistance 24/7 at the police station. Call us on 0114 258 3399 at 351 Abbeydale Road, Sheffield. Visit us at khansolicitors.com. Over 20 years experience in defending your rights. अरे शमसुद्दीन भाई यहाँ कहाँ घूम रहे हैं भैया रोडरम में कोई खाने का अच्छा जगह है रोडरम में उम्दा और लजीज खानों का वाहिद मरकज चौधरीज ओरिएंट एक्सप्रेस अरे भैया तो टाइम जाया ना करो जल्दी करो भूख लग रहा है देर न लाओ आज ही आओ ते फायदा उठाओ Cater to impress चौधरीज ओरिएंट एक्सप्रेस प्रिंसेस स्ट्रीट रोडरम टेलीफोन 01709 555527 हर कोई सज्जन मित्र बोले चौधरीज ओरिएंट दे पैगे रोले कुकड़ पाए दे गोश्त कढ़ाई आके खाओ होले होले Aziz Catering, the award-winning caterers specialising in weddings, engagement, birthdays, business parties or any other special occasion from 30 to 5,000 people and delivered anywhere in the UK. All starters, main course and desserts freshly cooked to order and you're welcome to taste before you order. Aziz Catering, 1 Whitefield Place, Bradford, BD8 9JB. Call 01274 488874. Aziz Catering, once tried, never forgotten. At iLet4U, we know that being a landlord can be a frustrating business, but it doesn't have to be. iLet4U can find you tenants in under a week. iLet4U, specialist in selective licensed properties. अगर आप मकान किराए पे लगाना चाहते हैं तो हमारी खिदमत हासिल करें और घर बैठे किराया पाएं. iLet4U पर हम आपके घर को अपना घर समझकर रेंट पे देते हैं. Start finding tenants today by contacting iLet4U, 60 Page Hall Road, Sheffield, 0114 327 2020.
मुअज्जम अली शहीद वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर-ए-एहतमाम जेलम में कायम अस्पताल में पिछले 18 सालों से इलाज मुआलजा मुस्तहिक अफराद को फी सबिलिल्लाह फराहम कर रहा है गरीब खानदानों और यतीम बच्चों के लिए माली इमदाद दी जाती है With your help we can save lives, educate and help reduce poverty. आप अपनी ज़कात सदका और खैरात ट्रस्ट को देकर इस कार खैर में अपना हिस्सा डालें For more info call on 0779 251 5561 or visit muslimtrust.org.uk إعلان عاجل لسائقي سيارات الأجرة وسيارات الأجرة الخاصة وسيارات هاكني كاريج مستر كومبنسيتر يدفع 2000 جنيه كتعويض لطالبي التعويض لسيارات الأجرة سيارات البرستيج وسيارات الدفع الرباعي بسبب الحوادث التعويض مضمون بنسبة 100% خدمتنا متوفرة طيلة 24 ساعة على 7 أيام اتصل بنا الآن على الهاتف رقم 0114-386-3386 التعويضات تنطبق على سيارات الأجرة فقط كل ذلك وفقا للشروط والأحكام. Connecting you to your community. This is Aman FM. सामिन और नाज़रीन इसी वक़ार अज़ान असर का वक्त हुआ चाहता है आप अपने इलाकों में अपने वक्त के मुताबिक नमाज अदा करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान एफएम से ये अज़ान एक्विटी लो चैम्बर सॉलिसिटर्स के ताउन से नशर की जा रही है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. O Allah, Lord of this perfect call, of not ascribing partners to you, and of the regular prayer which is going to be established, kindly give Muhammad, peace be upon him, the right of intercession and superiority, and send him on the day of judgment
to the best and highest place in paradise, which you had promised. This azan was sponsored by Equity Law Chambers Solicitors, Mansfield Road, Rotherham. Telephone 01709 368603. From the mountains of Makkah to the hills of Sheffield, you are listening to Iman FM on 103.1 FM. अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाज़रीन अज़ीज़ वकार आप समाअत फरमा रहे हैं रेडियो ईमान 103.1 FM आपकी आवाज़ आपका इंतखाब और आप देख रहे हैं ईमान टीवी ऑनलाइन और मैं हूं आपका पेशकार आपका मेज़बान राजा खुशनूद खान और पेश करता हूं प्रोग्राम मसला क्या है हर जुमा रात शाम 6 बजे ता 8 बजे सामीन और नाज़रीन अज़ीज़ वकार जैसा कि मैंने कहा था कि ब्रेक के बाद आपको आज का जो मौजू है वो बतलाएंगे और आज का मौजू जो मैं और मेरे मेहमान ज़ेर बहस लाना चाहते हैं वो है यहाँ में होने वाले इंतखाबात जो कि 8 जून पे को होने वाले हैं पे मतवक्को हैं और हमारी वज़ीर आज़म साहिबा ने अचानक उनका ऐलान किया ये सूरत-हाल क्यों पैदा हुई चूँकि जो आम इंतखाबात हैं और इस हुकूमत की जो मुद्दत है वो तो पूरी होनी थी 3 साल बाद लेकिन ये सूरत-हाल पैदा हुई ब्रेक्सिट के रेफरेंडम के बाद ब्रेक्सिट से पैदा होने वाली जो सूरत-हाल है उस कशमकश और उस सियासी कशमकश और सियासी जो तकरीबन बहरान की शक्ल अख्तियार करती हुई सूरत-हाल थी उसके पेश नज़र बहुत से सियासी पंडित जो हैं वो कह रहे हैं कि थेरेसा मे ने बड़े अहम वक्त पे जो है इंतखाबात का ऐलान किया है इसमें कौन सी पार्टी जीतेगी और आप किसका इंतखाब करेंगे ये सारे मामलात ज़ेर बहस आएंगे लेकिन उससे कबल मैं एक दो जो खबरें मैंने सुनाई हैं उस पे तबसरा चाहूँगा जनाब चौधरी मोहम्मद साबिर साहब का चूँकि ये दुनिया के हालात पे भी नज़र रखते हैं एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम अस्सलाम साहब जी कैसे हैं खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह only one thing that I would like to mention the atrocity being committed in Kashmir is really at the highest point this moment and we give courage to the Kashmiri people they are resisting and fighting for their human rights and obviously we would like that Muslim countries to take the initiative and to help Kashmiris as well as the Syrians and well as other Iraq, Libya and elsewhere they need to stand up for their own rights because at the moment we always look at towards the West West can only do so much and if you don't do things yourself nobody will support you and as far as the Kashmir concerned I think the whole Muslim country need to stand for them. Well Brother Muhammad Sabir I think you preempted me this is exactly the question that I was going to ask you in my news items in brief I had in Urdu in particular I said I talked about the violence in Kashmir and the social media ban now India is claiming to be the biggest democracy in the world and yet it's suppressing people's views and people's voices. It's not just happening in Kashmir it's happened in Delhi and elsewhere the Muslims in Indian states they are being oppressed badly since this government come into position and things are getting really bad and I know there's a lot of our brother Muslims in India they also said they shouldn't have been in Pakistan and we would have had a larger Muslim state but now we know that Pakistan is we are safer and we have more rights and now they feel it their thought was totally opposite than what reality is. Well, yeah, I mean, a lot of people claim and allege that India is a secular state and that, it doesn't exclude people because of their religious affiliation, and yet you are seeing Muslims being oppressed. I'll be honest with you, just not the India itself now, the current scenario of the world,
at this moment, Muslims are under siege, to be honest with you, because if we Muslims fail to see that, then we are blind, because since September 11, things start getting tighter and tighter, and Donald Trump, as soon as he come into power, whichever way democracy he managed to get through, still surprised me, and this snap election that Theresa May called, and that looks another disaster for Muslims as well coming up, because UKIPs are taking the statements are really horrific, and they've been. I always said from day one, UKIP I can't trust, because the BNP in suits, so that's all it is. Now they're showing real colours of their behaviour. By launching this very Islamophobic manifesto. Yeah, it is. We expected that. Muslims not waking up ourselves, and there's so much happened, we still sleep, and we have we got confusion in our Muslim society. We have so-called leaders that represent us, they misused us, and they do misrepresent us, because they use Muslim as a power to get somewhere. When they've gone somewhere, they disappear, and there's nobody there just standing up for Muslim cause. And I have a massive concern after this election. The Muslims are going to be furthermore scrutinized, oppressed. Islamophobia is going to be high, and we need to stand up for rights that belongs to ourselves. We'll come back to the general elections announced by our Honourable PM, Prime Minister, but let's go back to the plight of the Kashmiri people in occupied Kashmir. You are saying that there's a lot of people not paying heed to the plight of Kashmiris, but I've read articles by the New York Times, Washington Post, talking about the atrocities in Kashmir. Now that is good news. Being print out in a news or a print out in a newspaper or speaking on the digital media is not the answer. It needs to carry out United Nations resolution that needs to be taken. They should have an emergency session there on this and to deal with it and find a solution and hold India accountable for that. But one thing is that the people of Kashmir are very determined to stand, and I give them salute. After that oppression, they're still standing. Yes, I mean, people have the right to express their views, and people have a right to self-defense and their own they have a right of self-determination. And Kashmiri people, after the partition of India and Pakistan, after India and Pakistan were granted independence, Kashmir and Kashmiris were given the right of self-determination, and India agreed to it. It was India who accepted the right of Kashmiris for a right of self-determination, and yet it took its 70 years and 3 to 4 wars with Pakistan. And they are still occupying that land and oppressing those people. Obviously, as I said first thing, because I saw India will do what it's doing. It's never going to come to the table until it's squeezed. And to squeeze India is not going to happen by just asking West to do with everything, because West has got no interest in that, because that conflict in India, in Kashmir, between Pakistan and Kashmir, that's some reason it suits the West. And the people in the Muslim country, they need to stand against their own leaders, make them accountable, to lobby the foreign policy to the West and United Nations and get some solution. If long as they don't do it, the leader of the Muslim countries don't really take active role, and the leader of Muslim country ain't going to take no active role, because they know it's hard work for them, and they're too busy with other things, which is looting elsewhere. Obviously, that's my view. We see what's happening anyway, but they need to hold their leaders accountable. The public needs to stand up in a peaceful manner and hold them accountable, and they make sure they lobby through Foreign Office and get this resolution sorted. Western alone will not do it. If you put it in the media, you put it in a newspaper, that ain't going to change. Or coming in one person and just speaking at one delegation and just having a media talk and photo session, that ain't going to make no change. Okay, thank you very much for that. Ladies and gentlemen, you're listening to Radio Iman and Iman TV Online, and the views expressed by our guest or by our callers are not necessarily the views of Radio Iman or Iman TV Online, but you can join us, you can contribute, you can
you can disagree with the things that are being discussed, being talked about. I will ask you another question. Now, this ban on social media, how will it impact the struggle for freedom in occupied Kashmir? I don't think it'll stop Kashmiri people from doing what they're doing and standing against oppression, because they've been at it for many years, and they're not frightened. And only thing is, it's unjust getting the freedom of speech out, which is not allowed. But then again, there's no freedom. Indian authorities, they barbarically do things there, which is there's a lot of torturing happening, a lot of killings happening, and which has never been showed before anyway. So obviously, I can't see India being any responsible behaviour towards the Kashmiri. There has been a struggle for freedom from Indian occupation for the last 28 years, since 1989. Initially India was blaming Pakistan for sending its insurgents, but now everyone is accepting that this is a homegrown movement to rid themselves of Indian occupation. India is very good or very fast at lobbying and foreign affairs. In fact, India itself is committing crimes, war crimes, oppression, terrorism itself, and also exporting into Pakistan. That's been a number of times. Recently, one of the Taliban leader been arrested. He exposed them. It's not just that, the Kulabhushan Dev, he was another one. But failure of a Pakistani government and foreign office is not helping Pakistan. Otherwise, India would have been exposed more than what it's doing now. Right, thank you. Well, let's move on to the elections in our country, in Britain. You were saying that these elections and these parties are exploiting Islamophobia, and things are going to get worse for Muslims. Why do you say Definitely, that? because obviously, if you look at whatever America does, listening to your radio report earlier on, the news report earlier on regarding the Britain's may support America with the Syrian attack, it's not such thing as may. We have a may as a prime minister, but whatever America does, Britain always allies, whether it's legitimate or illegitimate, because Iraq war was illegitimate. So Britain's always been, whatever America says, is supportive. Whether is America wrong or right, there's no question asked. And with the snap election, that is another support for Donald Trump, because I see that because Theresa May's view, for start, what the Donald Trump did and the way he behaved against the Muslims, and she invited for a stay visit in England. And obviously the opposition's not happy about it. The people of England are not happy about it. And now she comes in the opportunity to get snap election quickly and help America carry out its atrocities. And what they're doing against these atrocities is against the Muslims. These atrocities are against Muslims, but these are general elections, and we are living in the oldest democracy in the world. Why should we see that as a threat to Muslims? I used to be proud of a British democracy, but now I see a lot of things, they don't look democratic. The process is democratic, but what outcome is, it doesn't look like anymore is democratic. And democracy gives you equal rights and equal opportunities, and which now, as a Muslim, I think we becoming more scrutinized, more squeezed, and there's more legislation being passed against the Muslim, and we're getting more cornered. Yes, I mean, we've seen a great deal of social erosion of civil rights, this government is saying that they will limit the number of immigrants coming into this country, even though immigration, it's been proven by industrialists, by businessmen, that immigration is vital for industry and for our social sector.
Definitely, because every country survives on immigrants, because the low-paid jobs carried out by immigrants. The indigenous population never carries out normal low-paid jobs, and you'll find a lot of unemployment. If you go to have a look into employment departments, you find a lot of people there looking for a job, but there's plenty of jobs they don't want to do. And it's because it doesn't suit them. And the immigrants carry out them jobs. And if you look at the farmers and cherry picking, whatever, a lot of work is being done by the immigrants. By Eastern Europeans. Eastern Europeans. Yeah. And they were the immigrants who built the Britain, because when after the war, the country was devastated. And our forefather came in and worked in the steel industry, elsewhere, in mills, and put the country on the map again. So if it wouldn't have been immigrants, they wouldn't have survived, they wouldn't have progressed quickly. You need manpower, and which is sustainable to pay as well. And that's what happened. But every country runs on immigrants. Even just imagine Pakistan is only a poor third world country, but there were 3 million Afghanis who came into Pakistan and helped the infrastructure and run the businesses. And they are still there. They're still there, yeah. But they are contributing. They're contributing, and Pakistan's are very proud of them and all. And that's how it's like Turkey. They took on 3 million Syrian refugees. But problem is, in West, what we do, especially in Britain, what we do, we want immigrants. We want taxi drivers to come and pick us up from home and take us to the pub and have or a restaurant to enjoy ourselves. And we got a doctor who's saving us if we get injured. We got a nurse who's looking after us while we have our problems. And we got full infrastructure saving us. And there's a takeaway restaurant, immigrants providing food and services for them. But when the things go bad, it's them immigrants. Yes, true. Immigrants are easy to blame. And ladies and gentlemen, I'd like to thank Raja Mohammad Nisar Saab, who has joined us on Facebook, and he's liking the program. खुदा आपको शाद रखे, आबाद रखे और गमों से आज़ाद रखे. राजा साहब, अगर आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो शामिल हो सकते हैं. If you'd like to join us, then please call 01142425 बहुत बहुत शुक्रिया. And we'll come back to Chaudhry Mohammad Sabir and ask him to continue his conversation. Right, Sabir, just coming on to in West now, especially Europe, America and Britain, if you want to win election, then take heavy handed on Muslims. Start Muslim bashing. Yeah, Muslim bashing, you guarantee the election win. And that's exactly what's happening in Europe. That's exactly happening in America. Donald Trump were against Muslims. That's first words, and he's got elected. Yeah. And this is now, it's a reality. If the Muslims think that the government, whoever comes in power, are going to look after us, you think twice. If you're a Muslim, you're going to be a target. And obviously, they use that because media since 9/11 played so much and created so much disease and poison. Now the general public mindset is that Muslims are bad, and obviously the terrorists, the few extremists, some of them they've never been a Muslim. They don't know what Islam is. True. Let's talk about this full-face ban on niqab, a full-face veil ban on Muslim ladies. What do you think about that? You said they were BNP in suits. Well, if you stick by that, or do you say, or would you say they're even worse than them? Well, in fact, I think the BNP never had this much power to get into a position to say anything. They managed to manipulate and get into that position, and now they're showing the real dragon teeth now that we see in them. But what it is, a full veil ban, okay, well, that is just a choice of a person, what he wants to do and how he wants to live. That's nothing to do with it. That doesn't affect anybody else. If somebody walking about in a bikini, and I can't say dress up, I'm a Muslim, it affects my spiritual belief. Yeah. No, this country is a free country. You have freedom of speech, freedom of expression. So therefore, they have no right to oppress on that. And they do take veil off when they go to airport, when they go to a bank, they take it off. So there's no big issue about it. Somebody was said, you can tell it's a female anyway. Like a lady in an interview on television said, they are a minority from a minority, and they pose no danger. These terrorists haven't been wearing full face, Well, this is another thing again. I said, pick on a Muslim, you win the election. That's what UKIP's trying to do now, pick up more seats, and they will do eventually. But
there has been an MEP who's leaving UPIC because he disagrees with their views. Yeah, but he's only one, and we salute him because he has morally understood and left the country, left the party because it's a completely racist party. That's what it is, and obviously a lot of our own people they were supporting UKIP, and I myself from day one I says there's a dragon inside the bloody cover, so stay away from him. In other words, what you're alleging, what you're saying, Mr. Sabir, is that they are wolf in lamb's clothing. Definitely, you can't trust them. Right, they're untrustworthy. I shouldn't be saying something like that because I'm not against one party. Well, our Prime Minister, personally, my views are I don't trust her because she did so many U-turns. And that is credibility of a person what says and delivers. It reduces, and I have a concern on that as well. Ladies and gentlemen, if you agree with Mr. Sabir's views or disagree, then you can call us. She's run out to use it out of a dictionary. Right. Okay. Thank you for that. And if you've got views, if you agree, or if you think you can contribute, or if you can, if you want to disagree, or you are disenchanted with his views, then please call us. And the number to call is 01142425 और मैं आप दोबारा आपसे उर्दू में गुजारिश करूंगा कि चौधरी साबर साहब कह रहे हैं कि ये जो यूकिप वाले हैं यूकिप पार्टी है और जो इंतखाबात में हिस्सा ले रही है उनके मंशूर में है कि नकाब पे वो पाबंदी लगाएंगे और जो शरई क़वानीन हैं देखें हमारे अगर शरई क़वानीन हैं तो हम मुसलमानों के माबैन ही हैं लेकिन इसके बावजूद वो मुसलमानों पे बहुत सी पाबंदियां लगाना चाहते हैं और वो साबर साहब कह रहे हैं कि ये यूकिप वाले जो हैं असल में बीएनपी हैं सूटू में और जोड़ू में अच्छे जोड़ू में जोड़े ही कहते हैं ना अच्छे कपड़ों में मलबूस और क्या आप इनसे इत्तेफाक करते हैं क्या आप इनसे इख्तिलाफ करते हैं जो भी आपकी राय हो आप राय का इज़हार करें और मैं बेताबी से आपकी फ़ोन का कॉल का इंतज़ार कर रहा हूं सामीन और नाज़रीन इसी वक़ार एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है खाली 40 सेकंड रह गए हैं चौधरी साहब मैं इस ब्रेक के बाद आपसे और न्यूज़ के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि और पार्टियों का जो नज़रिया है क्या वो भी नस्ल प्रस्ताना है मुतासबाना है या सिर्फ यूकिप वालों का ये अपना ये मेरा सवाल ज़हन नशीन कर लें लेकिन ये सामीन ज़ीवकार और नाज़रीन ज़ीवकार इस सवाल का जवाब देंगे चौधरी मोहम्मद साबर साहब जो कि सेक्रेटरी हैं अबू बकर मॉस्क ईस्ट वोट रोदरम के और बहुत ही मुतहर्रिक समाजी और सियासी कारकुन हैं और बहुत ही अच्छे ख्यालात और नज़रियात रखते हैं आप इनसे इख्तिलाफ कर सकते हैं या इत्तेफाक कर सकते हैं लेकिन इनके ख्यालात की जो गहराई है उससे इत्तेफाक या इख्तिलाफ नहीं कर सकते मिलेंगे इस ब्रेक के उस पार इंशाअल्लाह Equipping the generation towards a cohesive society. This is Iman FM. Children's show where you listen to stories from the Quran, nasheeds and naats. Keep listening to the Children's Show with me, Amina and Alina, every Saturday 3 till 4 on Radio Iman 103.1 FM. For reliable, professional, and quality immigration services, consulators, sponsorship visas, British citizenship, indefinite leave to remain applications, human rights, domestic violence, judicial reviews. You live your life. Let Consulators do the legal work for you. Call us on 0114-258-3399 or our dedicated 24-hour emergency helpline 07976 958 826 or visit www.consulators.com. Are you a sales executive that wants to work for the #1 community radio station, Iman FM, or a radio presenter ready to be heard on the airwaves? Then you are just one step away. Email your CV to info@imanfm.com or call us on 0114-242-0551 and the team at Iman FM will definitely be in touch. Your voice matters for your community. Iman FM. Al Mustafa Welfare Trust works in remote communities in the developing world to provide free eye care and life-changing cataract operations.
With your support, we can transform lives. Please donate what you can so we can continue our work by calling 0208 569 6444 and give people like Sadaf hope for the future. Thank you. Introducing Rapchick, the halal modern Indian eatery at Meadowhall. Experience fresh ingredients and Indian spices into a fast and easy format. We offer tasters all day long because we believe our food does the talking. Do you know we have a no-fry policy? Try our halal Hyderabadi biryani chef special for just £3.95. Come and see what the fuss is all about. Enjoy authentic halal Indian food with a difference at Rapchick. Find us on Oasis Dining Quarter at Meadowhall, Sheffield. लौंग वाली इलायची वाली कश्मीरी चाय पिलावांगे हींग वाला तड़का लाके पिशौरी गोश्त खिलावांगे न्यारी हलीम दे नाल हरन कढ़ाई टेस्ट करावांगे शाही फलूदा लौरी चना चाट रीगल चौक दे दही पल्ले ते गोल गप्पे याद करावांगे लौंग वाली इलायची वाली कश्मीरी चाय पिलावांगे जीरे वाला तड़का लाके चने दी दाल खिलावांगे लौंग वाली इलायची वाली कश्मीरी चाय पिलावांगे Arooj restaurant now open to reserve your table ring 0114 275 7786 286 Attercliffe Road Sheffield S4 7WZ एक बारी अरूज ते आओ तानु जाके दे अरूज ते पचावांगे Yes, who is it? Mr. Compensator. एक इंश्योरेंस कंपनी मिस्टर कॉम्पनसेटर को हराने की कोशिश में लगे हुए हैं लेकिन वो ये नहीं जानते मिस्टर कॉम्पनसेटर को हराना मुश्किल नहीं नामुमकिन है टैक्सी क्लेम ले आओ और 2000 ले जाओ मिस्टर कॉम्पनसेटर गोल्डन टैक्सी एबिडेल रोड S71FJ कॉल 0114 3863 386 locally at 103.1 on FM at imanfm.com on the internet. This is Iman FM. From the Sky News Centre at 7, it's believed a man arrested near Downing Street on suspicion of planning a terror attack was known to authorities. The 27-year-old was detained by armed police this afternoon following a stop and search. He was carrying a rucksack with several knives inside. Security expert Matthew Glanville says such incidents are to be expected following last month's Westminster attack. It's not entirely surprising that following the attack of Khalid Massoud that you would see probably more amateur attempts to replicate the same target. We saw, for example, after the 7/7 bombings, 2 weeks later, another group tried to replicate the same tactics. The Royal Marine, who had his sentence reduced for shooting dead an injured Taliban fighter in Afghanistan, will be released from prison by tomorrow. A campaign group for Alexander Blackman claims he'll be taken out of HMP Earlstoke in Wiltshire in the early hours. Police are investigating after a 30-year-old man died in Somerset after apparently taking the drug Spice. The 30-year-old was found unresponsive in Taunton yesterday afternoon. Jeremy Corbyn has vowed to avoid name-calling in the general election campaign. His comments follow Boris Johnson's personal attack where he called him a mugwump who threatened national security. In sport, Manchester United's derby with Manchester City has extra significance tonight. A win for Jose Mourinho's side would take them above City into the Premier League's top four. The United boss says finishing ahead of their big rivals in the table isn't his main concern. This is not about Pep, this is not about City, this is about objectives and fight for objectives. And we want to try to play Champions League football. World tennis number one Andy Murray is through to the quarter-finals of the Barcelona Open. He beat Feliciano Lopez 6-4, 6-4. And Ronan Keating says he's bursting with love after welcoming his first child with his wife Storm. He's put a photo of their newborn on Instagram. That's the latest. I'm Victoria Lawrence. अस्सलाम वालेकुम सामीन इसी वकार आप समाअत फरमा रहे हैं रेडियो ईमान 103.1 FM आपकी आवाज़ आपका इंतखाब और आप देख रहे हैं ईमान टीवी ऑनलाइन और मैं हूं आपका पेशकार आपका मेज़बान राजा खुशनूद खान और पेश करता हूं प्रोग्राम मसला क्या है हर जुमेरात शाम 6 बजे ता 8 बजे और सामीन और नाज़रीन ज़ीवकार विक्टोरिया लॉरेंस की खबरों के बाद मैं अपने इंतहाई
काबिल कदर मेहमान चौधरी मोहम्मद साबिर साहब से दरख्वास्त करूँगा जिस मौजू पे बात हो रही है और वो इंतखाबात हैं 8 जून को जो होने वाले हैं वो फरमा रहे थे कि मैंने उन्हें सवाल किया था कि यूकिप वाले जो हैं आप कह रहे हैं कि वो नस्ल परस्त हैं और बीएनपी असल में वो बीएनपी वाले हैं अच्छे लिबास में अच्छे जोड़ों में अच्छे कपड़ों में अच्छे सूट्स में तो दूसरी पार्टीज़ के मतलब आपकी क्या राय है जनाब चौधरी साहब दूसरी पार्टी में भी कुछ हज़रात हैं और इतने there's not as much as the UKIP itself but जो to win an election you have to bash Muslims that is the motive anyway on the Labour Party I don't think Jeremy Corbyn is very socialist and also is believing in humanity and fairness I don't think he'll win this because of the media poison being sent out since September 11 up to today. Now if he supports a Muslim then you have no prayers which he looks for as a humanity is looking at a different angle and great to have him as a Prime Minister. It will make things better that we a lot of the immigrants and give rights to a lot of communities but it looks unlikely to win. On the other hand the campaign manager being appointed by the Conservative Party, it was the very same campaign manager who was helping Mr. Goldsmith against Sadiq Khan and he was very Islamophobic and also racist and that was highest point and that was unbelievable but thanks to the people of London which is more diverse and multicultural city and they elected Sadiq Khan and this one because it's national it looks quite concerned. Well yeah I mean people in Greater London elected Sadiq Khan despite the racist rhetoric against him so the good people of England of a fellow human beings of a fellow nationals of a fellow countrymen and women will surely vote for the right party so they could vote for like you said for Mr. Jeremy Corbyn. It could possibly happen but it looks the minute chance of it and I might believe because I think Jeremy Corbyn even in his own party there's been a lot of rhetoric and the opposition he faced from the elite and because his views were more fair to the humanity and because of the cabinet were resigning one after another but I give him credit for standing there and staying there. Wouldn't you give credit to the Green Party for example? Green Party they're doing quite well at one moment but all it is they're not big enough and they're not great at the moment. The battle's going to be between Conservative and Labour is going to happen and Theresa May because of the environment being created over the years and also the Donald Trump in power this moment the spin doctors will and the media will focus more on Theresa May and to support America and there will be influence from the America just like Russia were influencing American election. So Mr. Sabir what you're saying is that we are going to have a domino effect. Definitely. Definitely. Yeah, ladies and gentlemen, brothers and sisters, you are listening to Radio Iman and Iman TV Online and at Iman TV and Radio Iman we promote community cohesion. We promote love, peace, brotherhood and tolerance. But above all, we promote community cohesion. And like I said, ladies and gentlemen, the views expressed by our guest or by our callers are not necessarily the views of Radio Iman or Iman TV Online. And if you agree with the views expressed by Mr. Sabir or the callers, or if you disagree, then please join us. And I wish you rang. And the number to contact and get in touch with us and be our studio guests online is 0114 2425 200.
Yes, we are having. We are seeing this domino effect even in Europe. We are seeing that Le Pen is, contesting for president of France, and she's in the top 2, so she could possibly end up being the president of France. Definitely, because Europe has gone towards far right and more extreme, and that's why another reason that Britain needs to take that line to survival, because what the Europe is doing is it's not much about the immigrants, it's more about Muslims. And because of the few extremists causing havoc and across Europe, which is un-Islamic, and they have nothing to do with Islam. And because the media portrays it in that manner, and general public becomes scared, and then whatever the fascist views of the government or the candidates, people take them on board. But I mean, we find generally, that the people, the indigenous people, the majority community are, good people. And are you saying that they get persuaded to have these feelings and have Islamophobic views because of the media? Obviously, it's the media obviously plays a lot, and then again, the government it perceives it and legislates it in that manner as well. We try, as we will always trying to get the extremism label to the Mohsin Khan's murder, which the government is still dragging their feet. And that was extremist murder and terroristic murder as well. True. Same with Salim Khan in Birmingham. Sadiq Khan. Right, yeah. Exactly same. And when it comes to Muslims, the governments legislating very slow and very weak. But when it comes to a non-Muslim, they take very proactive action, and immediately Cobra meeting happens and everything. So extremism, terrorism is in all forms. It's a bad behavior of anybody who terrorizes any community or any society. Okay. So what you're saying is that the media whips up racism and hatred against Muslims, and politicians do the same. So with these views, what would you advocate? What would you advise the Muslims to do during these elections? I'll be honest with you, the Muslims, they should have done decades ago before. They had time, they became complacent. I myself see it, they won't be able to do anything really now. And they just have to get out and get a vote and make sure the person they're voting for, ask them, what are you going to do? Even though it might be false promise, but at least you're questioning them. So bear that in mind, and you must come out and vote. That's very more important. And select your candidates very carefully and make sure they work in interest of you that you're voting for and gives you equal rights that you're asking for. Nothing more than that. So what you're saying is that Muslims shouldn't waste their vote? They should vote? No, they shouldn't wait. They should. See, this is another thing, because when Brexit happened, some Muslims were allying, we should be out and better, and most of them didn't even bother voting, and they should have voted, and that could have made a difference. Now, coming out of Europe, it's become worse for the immigrants, and the far right and some other organisation, they don't see us as the citizens of Britain. So they don't see it because they've completely got blinkers on. Yeah. So therefore, you need to keep your guards up all the time and keep standing, and which we don't really. And we need to come out and vote, and we should make use of vote in the right prospective manner. Make sure the candidates will look after our interest in fairness to everybody else. Thank you very much for that. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, you are listening to Radio Iman and Iman TV Online. And as I said, the views expressed by Mr. Sabir or our callers will not necessarily be the views of Radio Iman or Iman TV Online. At Radio Iman and Iman TV, we promote love, we promote peace, we promote brotherhood, we promote tolerance.
And above all, we promote community cohesion. But we have these impending general elections happening on the 8th of June, and we've got to talk about the issues, and we've got to talk about the manifesto of all these parties, and what Mr. Sabir is saying, that these parties hold views that are Islamophobic in order to attract the extremist vote. But, you know, if you differ from his views, if you differ with him, or if you have your own views, please call. And the number to call is 0114 24 25 200. Janab Chaudhry Sabir Saab. Well, we have, the reason I have my views are, Sahab, because in Rotherham we've seen it. We felt it, and we experienced it. That's why even the elected members didn't want to support the Muslim community. They put them to a corner because whatever the failures of the authorities was, and the failures of law implementation departments, and they were all passed on to the Muslim community. All rubbish was chucked onto them, and they were cornered to the wall. And the political elected members, their duty was to make sure the victims, they should have been served justice in time they were elected. Sure. And their job is to make institution play their role and carry out the law that need to. They don't work beyond the law. The check and balances they never did at that time. And we had a new setup who came into Rotherham again, and they did the same thing again, because they start helping the one community and the victimizing another one. So they should have been check and balance for all the communities. And now, because after challenges, and we stood up our grounds, and we managed to get them to look at us as an equal citizen, and we are being as victimized. So that's perception change, because we stood up ourselves. And if we wouldn't have done that, we would have been treated as victims, as a criminals. Now, ladies and gentlemen, Mr. Sabir is talking about the events that took place after the murder of Mohsin Khan, an elderly Muslim man, 80 years above, who was killed by fascists, by racists, and Muslims protested against the coming of these right-wing groups in Rotherham, and eventually 12 Muslim men were arrested, and it was found out they were arrested on bogus grounds because they were found innocent in Crown Court. And what Mr. Sabir is saying and talking about is the legally elected leaders of the council not helping, assisting, or understanding the plight of these young men, or their families. They shut the doors on us. Mm-hmm. And that because somebody else committed the crime on the children's side, the sexual exploitation, and you don't make the innocent person as a victim as well. So they start victimizing whole community. Well, the Muslim community has been condemning these people who have been involved in grooming, but surely anyone who commits a crime should do the time. But if a family member of yours commits a crime, only he or she should do the time, not the whole family. Not the whole family. And in the case of the Muslim community, the whole community has been tarnished with the same brush. The complete cabinet refused to talk to us. Well, that was the leader of the council refused to talk to the community. I'm surprised at hearing that, but I have heard these views, ladies and gentlemen, before. But their job was to make sure that the police is doing that job correctly. They're implementing law, they're not exceeding the law, and the social service is doing their jobs, and all the departments. That's what the elected members' job is, to hold if the police is not doing that job and crime is rife in, their job is to make sure they act on it and hold the criminals account. Right. And same thing, their job is to make sure the police or authorities don't commit crimes beyond their requirements. Mm-hmm. And Rotherham 12 campaign have been campaigning for police to be more accountable and for police to be more transparent, and we had some success, inshallah. Yeah. And hopefully, because at the moment the 2 trials still going on in May. So right. After that we'll be talking. But since then, the perception in the police has been changed. The last protest happened in Rotherham, and the police behaviour was excellent. And they're totally different to what it was previously in September. Yeah. So that's only because we stood up ourselves. If it didn't, they would have treated you exactly the same.
And you've and your family have been deeply involved in the Rotherham 12 campaign. I know that from experience. Are you asking for the people who were involved in grooming to be convicted and to be definitely they're criminals. There's nothing to do with this community. Okay. They're part of the criminal community. Anybody commits crime. I'll give you an example. 2 weeks ago, somebody parked outside Masjid. They parked a car on a giveaway to come and read Jummah and blocked the street. And I was annoyed, and then police came afterwards and said that we will be monitoring this area now because we had a complaint. I says, they said, if anybody parks wrongly, we'll give them warning ticket. I says, don't give them warning ticket, give them a ticket. Because if somebody's blocking somebody's drive and block the road, you can't give him warning, give him what the law says. Don't be hesitant on that. If not, give me a book and I'll do it for you. That's laudable. That's laudable. And you're all also asking for these facilitators of groomers, because this grooming has taken place over a period of time. Over 20 years, I've been led to believe. It's happened not just in Rotherham. There were some cases in Huddersfield. There will be some in Sheffield, Bradford, elsewhere. Rochdale's happened, Oxford. It's not just the Asians. It's a rifling through football and everything. Obviously, now the tide has come to clean this up, which has been happening for the last 30, 40, 50 years, and which is right to do, but it shouldn't have been allowed in the first place. True. And what you're saying and what your campaign has been saying is that the facilitators should be equally held responsible Definitely. for these heinous crimes. Yeah, those who haven't acted on, who've been paid for, they should be charged with, because they failed to do duty, they got paid for. Right. Let's quickly move on to the elections, the forthcoming elections. So what you're saying is that there are very limited number of political parties who are liberal, and the trend to move to the right is following Trump's victory in America. Definitely, just Trump and what's happening in Holland and in Europe as well. So it's all lot because the general public, there are a lot of good people as well. But the young people, they get mobilized by the media and they see what's happening around them. They see Islam as a threat to them. In fact, Islam is a peace and is a prosperity. But we don't force Islam's never been forced on anybody. I know, Chaudhry Sabir, that you've been working for community cohesion along with Radio Iman and RFID, the organisation that I'm chair of, Rotherham Friends Indeed. You've been working tirelessly for community cohesion, and in fact you've got a family which consists of Muslims as well as Christians. That's right, yeah. But what you are against is discrimination and prejudice. That's right. We want the right. Well, what it is, we have our shortfall as well, because we've been in 50, 60, 70 years in England, and we never believed that we belong to Britain. We need to take ownership of our country. I'm sorry to interrupt. Hello, I believe there's a caller online. Assalamu alaikum, caller. कौन और कहाँ से? राज साहब, मैं इशफाक अली बोल रहा हूँ. मेरी जानब से आपके दीवाने में आपके सामीन और नाजरीन को भी सलाम. बहुत बहुत शुक्रिया, खुशामदीद, अहलन व सहलन, मरहबा या अखी. बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक साहब. आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन आपने मेरा ख्याल एहसास कर लिया और आपकी आवाज़ बिल्कुल साफ और अच्छी आवाज़ आ रही है. फरमाइए आज के मौजू पे और आइंदा होने वाले इंतखाबात के मुतल्लिक आप क्या कहना चाहेंगे? दरअसल मैं आपका प्रोग्राम जो है, I've been listening to it sort of intermittently, so जो जहाँ तक इलेक्शन का तल्लक है, मैं चौधरी साहब की भी बातें सुन रहा था, चौधरी साहब की, कि वैसे जाहिर है कि जैसे जनरल कंसेंसस या जो ओपिनियन है, मैं समझता हूँ वो तो कंजर्वेटिव और थेरेसा मे के हक में काफ़ी वैसे उसका पॉपुलैरिटी ग्राफ आई थिंक काफ़ी अरूज पे है. और बाज ये भी कह रहे हैं कि maybe obviously quite a comfortable victory for the conservative. Nevertheless, चूँकि जाहिर है कि ब्रेक्सिट की वजह से जो है थेरेसा मे के भी और टोरी के भी विदिन मेरा ख्याल है वो काफ़ी अनरेस्ट थी. इसी तरह क्योंकि लेबर जो है, I mean obviously मैं अरसा दराज के शुरू से 20-25 साल से लेबर के जाहिर है
उनकी सपोर्ट करता हूं और अंडा भी इंशाल्लाह लेबर की सपोर्ट करूंगा मैं तो यही चाहूंगा कि आपके जो सुनने वाले हैं कि कंपैरेटिवली अगर देखिए तो मैं समझता हूं कि लेबर जो पार्टी है हमारे लोगों के लिए कदरे आल जो है वो बेहतर है बट नेवरदलेस वो तो आर इंडिविजुअल पे है कोई जो जिससे वो मुनासिब चाहे जिसे वो उनके नजरिए में जो भी चाहे उनको वोट दें मगर वोट जरूर डालें क्योंकि जैसे आपने मेरे ख्याल है चौधरी साहब ने इस बात पे अलूड किया कि यूकिप वाले जो है वो भी काफी मुतरक है तो मैं समझता हूँ कि अगर हमने उनको डिफीट करना है तो आपके जो सुनने वाले हैं वो जो नाजरीन या देखने वाले हैं उनसे यही इल्तिजा है कि 8 जून को जो है वो आप आए और अपनी जो वोट है उसको जरूर कास्ट करें क्योंकि देखिए बाज राज साहब ऐसे शहर है जहां हमारी जो मुसलमान या पाकिस्तानी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी कश्मीरी है बिल्कुल उनका वोट जो मैं समझता हूँ बहुत डिसाइसिव है और वो बाज़ औक़ात वो ऐसे साबित भी ऐसा वो उसी तरह होता है कि हमारी जो वोट्स है वो काफी जो है इधर वे या डिफीट या विक्ट्री की जन्म लेके जा सकती है तो मैं समझता हूँ कि इट्स इम्पोर्टेंट कि वी मस्ट कास्ट वोट क्योंकि जहाँ तक छोटे नौजवानों का तल्लक है देखिए राज साहब मैं खुद घर में यकीन कीजिए कि अगर बेटे या बेटी को कहूँ कि ओके वोट ले तो वो यकीन कीजिए दिलावा हेल्थी डिबेट और बाद में ये कहते नहीं डैडी हम तो जो है वो लिबडेम को वोट देंगे पर नेवरदलेस राजा साहब हम आपके ख्यालात और नज़रियात का एहतराम करते हैं और आपकी अपनी पसंद है आप जिसको मर्जी है वोट दें रेडियो ईमान की जानिब से हम कहना चाहते हैं कि हम अपने लोगों को ये कह रहे हैं कि अपने वोट का इस्तेमाल करें जिस भी जमात को वो पसंद करते हैं फरमाइए कि वोट ना देने से क्या नुकसान होगा देखिए ना देने से टिपिकल जो एग्जांपल है वो आपके सामने जो है ये जो एक्सट्रीम या लेफ्ट विंग की जो पार्टीज हैं मैं समझता हूँ उनको जो है वो फायदा उनको जो है वो मिलता है तो इसलिए इंतहाई जरूरी है बल्कि इस ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस के अशफाक साहब आपका मतलब इंतहाई दाएं बाजू की बाएं बाजू की नहीं दाएं बाजू की सॉरी तो उनको अगर प्रीएम्प्ट करना है या उनको डिफीट करना है तो गो एंड कास्ट योर वोट तो इट्स इम्पोर्टेंट एंड मैं खुद अगर जैसे आपने जहाँ फरमाया कि जो ईमान एफएम है वो तो ज़ाहिर है किसी दे नॉट पार्टीजान टू एनी पॉलिटिकल पार्टी वो तो इम्पार्शियल एक रेडियो स्टेशन है जी मगर मैं चूंकि अपनी तरफ से जरूर कहूँगा कि अगर जो भी सुनने वाले या देखने वाले को लेबर पार्टी की जरूर सपोर्ट करें या इंडीड एनी अदर पार्टी अपार्ट फ्रॉम जो ये राइट विंग जो वो अपार्ट फ्रॉम देम अदरवाइज क्योंकि बी क्वाइट डेट्रीमेंटल वैसे भी जैसे आपने कहा है और चौधरी साहब ने अलूड किया है कि हालात सिंस 9/11 इस्लामोफोबिया जो है वो it's at the highest level and still I think will be continue to अशफाक साहब आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया आप शाद रहें आबाद रहें और गमों से आज़ाद रहें एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है अगर ब्रेक के बाद आप शामिल होना चाहें तो खुश आमदीद अल्लाह खुश रखे राज साहब मेरी जान से आपको सलाम और आपके एनालिस्ट चौधरी साहब को वालेकुम सलाम बहुत शुक्रिया सामीन नसीब कार एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है फिर शुक्रिया अदा करता हूँ अशफाक यानी साहब का हमेशा अच्छी राय और अच्छे नज़रियात का इज़हार करते हैं और अच्छे अंदाज से online at www.imanfm.com and on our app you're listening to Iman FM. The world is changed. I feel it in the water. I feel it in the earth. What were we and what have we become? How are Muslims behaving? What happened to education? How do we integrate? All these and many more. Real problems, real situations. Join Amar and Iqbal for Real Talk every Friday 10 p.m. on Iman 103.1 FM. In a world where accident
claims are poorly managed and the referral fees paid are so low. And just when all hope is lost in the city of Sheffield, a hero emerges. A hero so powerful, one phone number is all you need. A hero named Mr. Compensator. For your referral fee of £2,000, call Mr. Compensator now on 0114 3863 386. Terms and conditions apply. ओ दोस्ता बनी ठणी तक किथे तैयारियां नी मैं जुलियन और जुमेरा दुबई जा रहे नहीं जुमेरा स्पाइस रेस्टोरेंट उथे क्या खास है 1976 दी देसी रवायती खाने जेड़े पाकिस्तान ने जाने माने शेफ बनाने ने खाई ता वतनी याद अच्छा है लैम्ब चॉप्स चिकन बोटी लीवर टिक्का चिकन काबली मेन डिशां विच देसी स्टाइल हाउस स्पेशल कढ़ाइयां ते बाल्टी डिशां अच्छी तरह खाओ या डिलीवरी कराओ जुमेरा स्पाइस रेस्टोरेंट 1 The Common Actisfield Sheffield S35 9WJ 01142 467 238 मैं जा रही हूँ द बाजार में For a great happy shopping day, visit the bazaar. You will love the new bazaar. जहाँ पर हर तरह के नए फैशन अच्छी कीमतों के साथ खुले हैं. Visit the bazaar at Syme Street, BD1 3RB, former Rawson Market. Open every Saturday, Sunday, Tuesday, Wednesday and Thursday from 10 a.m. to 7 p.m. Also every Wednesday at Leeds Kirkgate Market. The Bazaar, जहां आपको हर किस्म की चीज मिल सकती है. The bazaar. Ooh yeah. मेरा नाम आयशा है और मेरा ताल्लुक कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मीरपुर से है. कोर्ट एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स जरीकस मेरे ख्वाबों की जन्नत जहां बेहतरीन देखभाल आला तालीम बेपनाह प्यार और मेहरबान शफकत हम सबको हासिल है. अब फेज 2 में 500 बच्चों और बच्चियों के लिए रिहाइशगाहें बन रही हैं और इसके लिए 9 करोड़ रुपए चाहिए. मुझे यकीन है आप मायूस नहीं करेंगे. कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट 0300 123 774 court.org.uk. Iman FM on air 24/7 365. We're ready to help you promote your business to your target market, from airtime campaigns to program sponsorship, social media interaction to online campaigns that'll reach your customers quickly and effectively. Call us now on 0114 242 0551 or email info@imanfm.com and let's get things happening to your business with Iman FM. ओ दोस्ता ओ मेरी स्पीडिंग टिकट है मैं क्या करा तू खान सोलिसिटर्स की कॉल कर उना कोल स्पेशल टीम ही जेडी रोड ट्रैफिक केसेस रेड लाइटां नो इंश्योरेंस तो किनी के इमिग्रेशन फ्रॉड मनी लॉन्ड्रिंग पर्सनल इंजरी क्लेम्स सिविल लिटिगेशन तक कत्ल ने केस भी हल करने ने ते जे तुसा समझो कि पुलिस तुसे नाल कोई ज्यादती कीती है ते ओ कंपनसेशन भी दुआने ने ओ खान चुड़ा माड़ी जान Khan Solicitors 351 Abbeydale Road Sheffield 0114 258 3399 Online at www.imanfm.com and on our app. You're listening to Iman FM. अस्सलाम वालेकुम सामीन इज़ी वकार आप समाअत फरमा रहे हैं रेडियो ईमान 103.1 FM आपकी आवाज़ आपका इंतखाब और मैं हूं आपका पेशकार आपका मेज़बान राजा खुशनूद खान और पेश करता हूं प्रोग्राम मसला क्या है हर जुमेरात शाम 6 बजे ता 8 बजे और आप देख रहे हैं ईमान टीवी ऑनलाइन इंतहाई शुक्रगुजार हूँ मशकूर हूँ ममनून हूँ और मकरूज़ हूँ भाई अशफाक यानी साहब का जो कि हमेशा बड़ी नफीस गुफ्तगू फरमाते हैं तजर्बाकार हैं मुशाहिदा रखते हैं बहुत से मामलात और मसाइल पे और आज वो आपसे मुल्तमिस थे कि आप अपना वोट ना ज़ाया करें और वो एक पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे मैंने उन्हें बताया था कि रेडियो ईमान किसी भी पार्टी की हमायत नहीं कर रही लेकिन हम हमायत ज़रूर कर रहे हैं आपने वोट का इस्तिकाक जो है उसे महफूज रखने के लिए कि आप अपना वोट जो है ये आपका कीमती असासा है और जैसा कि चौधरी साबर साहब जो हमारे काबिल एहतराम मेहमान हैं और हमारे मुस्तकिल मेहमान हैं वो कह रहे थे कि बहुत सी ऐसी सीट्स हैं जिस पे हमारे जो वोट्स हैं और अशफाक यानी साहब भी कह रहे थे कि वो फैसला कुन साबित हो सकते हैं यानी डिसाइसिव हो सकते हैं इसलिए आपने वोट का इस्तेमाल ज़रूर करें बिलखसूस आज
जिन बातों पे गुफ्तगू हो रही है, जिन मामलात और मसाइल पे गुफ्तगू हो रही है, अगर आप चाहते हैं कि ये इस्लाम मुखालिफ जो क़वानीन या मंशूर हैं या क़वानीन जो लाना चाहते हैं यूकिप वाले या और तो फिर आपको अपनी राय का भी इज़हार करना चाहिए और आपने वोट का भी इंतज़ाम, इंसराम और इस्तेमाल ज़रूरी है। जी बढ़ते हैं अपने मेहमान की जानिब। चौधरी साहब एक बार फिर मौजबाना सलाम। जी चौधरी साहब फरमाइए कि ये जो जमातें इंतखाबात में खड़ी हो रही हैं, इनके अलावा कोई और जमातें भी हैं जो ब्रेक्सिट की वजह से या इंतखाबात की वजह से कुछ तक़वियत पा रही हैं, जिनकी क़ुव्वत में इजाफा हो रहा है? Definitely, because जब ब्रेक्सिट हुआ इकोनॉमिकली भी हिट काफ़ी हो सी, जिसकी वजह से काफ़ी जो BNP है वो भी फील्ड में आएगी और दूसरे जो काफ़ी और पार्टियाँ हैं, यूकिप तो इसमें बहुत फ़ायदा उठाएगी। लेकिन हमें चाहिए कि उस भरपूर हिस्से से जो भी मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं जिनके साथ हमने ताम रखा है उनको वोट दें। और फर्दरमोर आई वुड से अगर आपके पास रिसोर्सेस हैं जो MPs वगैरह हैं उनकी कैंपेन के फंडिंग भी करें, जैसा कि उनकी फंडिंग करें और उनसे बोलें कि हम आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन हमें जो हमारे इंसानी हकूक़ हैं उनका ख्याल रखना ज़रूरी है। जब आप मुश्किल वक्त में किसी की मदद करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर इंसानी हकूक़ दैट्स द जॉब टू डिलीवर। यानी चौधरी साबर साहब मेरे सामीन और नाज़रीन के लिए ये बता दीजिए कि जो दाएं बाजू की बिलखुसूस जमातें हैं वो ये जो जहरीला कैंपेन है इसकी वजह से आप महसूस कर रहे हैं कि वो तक़वियत पाएंगे? Already पा चुके हैं, because just such as Brinfest and EDL and Pegida, all them far right, they use in social media in max way, but they use in our weaknesses, जो कि हम गलतियां करते हैं ना, क्राइम जराइम में हम जो बच्चे भी बुजुर्ग भी ऐसे गलती जो हमसे हो जाती है जिसकी वजह से they are uploading onto social media and exposing us, and इसलिए हमें चाहिए कि हमें इस्लाम पर आना चाहिए, कुरान और हदीस पर अमल करना चाहिए, and we will definitely succeed, but we need to refrain from the crime, and जुर्म से ज़्यादती से हमें परहेज़ करना चाहिए। चौधरी साहब मैं आपको दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। प्रोग्राम हमारे जो शुरू में आप टुरते थे, अब आपने चलना शुरू कर दिया है। आपकी उर्दू जो है टुरने से चलने तक जो है चलने तक तरक्की पा चुकी है। आपकी उर्दू जो है बदस्तूर बेहतर हो रही है, माशाल्लाह। सामीन और नाज़रीन ज़ीवकार, मैं चाहूँगा कि आप अपनी राय का इज़हार करें, और राय का इज़हार करने के लिए ज़रूरी है कि आप हमारा फ़ोन नंबर जो है वो मिलाएं, और वो नंबर जो है मैं एक बार फिर आपको बतला देता हूँ, 01142425 है। और मैं एक ज़रूरी ऐलान करना चाहता हूँ, and I'd like to make an announcement from the reputable international charity Families Relief charity, which is launching an appeal for £10,000 in Yemen, the war-torn Yemen. They are building a mosque and a well, which will be providing water for 30,000 people, and providing prayer facilities for surrounding villages. So if you wish to contribute, if you wish to donate, then please call Families Relief Charity on the following numbers: 0114 365 4454, and the other number is 077 91 389596, and the third number is 0121 440 8840. Yes, Families Relief Charity will welcome any donations. You can contribute anything from £100 to £1,000 or even £5. Whatever you wish to contribute, donate, please do donate. This is for a very noble cause, to help somebody
with water, provide water for the thirsty, or provide food for someone who's hungry, is an invaluable task. It's our religious duty to help our brothers and sisters, to provide a well for them and provide a mosque to pray in. This mosque has been built and it's nearing completion, and they require some money to complete this work, and also they want to build a well. So please get in touch on these numbers. Thank you. सामीन और नाज़रीन इज़ीवकार, आप समाअत फरमा रहे हैं रेडियो ईमान एंड ईमान टीवी और ईमान टीवी ऑनलाइन, और मैं आपसे फिर मुल्तमिस हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे साथ रब्ता करें. अगर आप हमारे साथ रब्ता नहीं कर सकते तो मुझे अफसोस होगा, और मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ. और देखिए, हमारे लोग इतने हसास हैं और इतने मेरे हमदर्द हैं. किसी बहन या भाई की कॉल आ गई है, देखते हैं और सुनते हैं कौन है. अस्सलाम वालेकुम कॉलर, कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम कॉलर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. राय साहब अकबर अर्ज कर रहा हूँ नदरज से. माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, और साबिर भाई को भी सलाम अर्ज करें. जी नवाज़िश साबिर साहब भी आपको सलाम कह रहे हैं जनाब. अहलन व सहलन मरहबा जनाब, क्या फरमाना चाहेंगे? राय साहब, वेरी नाइस प्रोग्राम, एंड आई जस्ट वांटेड टू जस्ट ऐड समथिंग ऑन जो साबिर भाई ने अभी बात की है कि जिस भी पार्टी या जो भी सिलसिला है कि उनको डोनेट करें. मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारी जो पाकिस्तान की सियासी पार्टियां आती हैं उनको तो हम जो है ना खाने तो बहुत कुछ करते हैं, कि अगर किसी भी पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं उनके मेंबर ही बन जाए तो मेरे ख्याल में उनके लिए ये भी बहुत बढ़िया जो है ना डोनेशन हो जाती है. बेशक. तो इस ध्यान से, क्योंकि हमारा जो है हकीकत बात है वो यही मुल्क है, यहाँ हम रह रहे हैं, हमारे बच्चे हैं यहाँ, इनका फ्यूचर भी यहाँ है. और जो कुछ भी आप कह रहे थे मैं सब सुन रहा था, तो मैं उस लिहाज से ये कह रहा हूँ कि जाहिर है ये इलेक्शन आ रहा है और वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, और हम इसमें अपना पर्सनली मफाद ना देखें, हम पूरी कौम का मफाद देखें. अगर मेरा कहीं एडजस्टमेंट हो रहा है किसी पार्टी में जस्ट मेरे लिए, तो वो मुझे नहीं तय करना चाहिए. मुझे ये सोचना चाहिए कि कौन सी पार्टी बेहतर है जो हमारे मुसलमानों के लिए अच्छा काम कर सकती है. देखें जहाँ तक उनका फॉरेन इंटरेस्ट है, वो तो कोई भी पार्टी होगी विल बी टोटली डिफरेंट, लेकिन क्योंकि हम इस मुल्क में रह रहे हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि हम मुसलमानों के लिए कौन सी पार्टी जो है ना वो बेहतर सिलसिला होगा, और उस पार्टी को वोट भी देना चाहिए, और उस पार्टी के साथ मुंसलिक होने के लिए मेंबरशिप ले लें. उनको जो है ना सिर्फ मेंबरशिप भी अगर भाई नहीं लेते हैं तो अगर आप एक घंटा भी उनके लिए डोर नॉकिंग के लिए स्पेयर कर दें, लिफलेटिंग कर दें, कुछ भी कर लें, ताकि ये भी हम साबित करें कि जी हम सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पीटीआई, पीपल्स पार्टी उनके नहीं, हम यहाँ की भी जो सियासत है इसमें भी हम जो है ना अपना पूरा अमल और दखल जो है ना वो बिल्कुल भरपूर जो है ना कर रहे हैं. अकबर साहब जी बहुत अच्छी आरा का आपने इज़हार किया. चौधरी साबिर साहब कुछ फरमाना चाहते हैं? जनाब अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपका. इसमें असल में बात यह है कि जो मेंबरशिप ये तो पहले इंपॉर्टेंट है, पार्टी किसी की भी उसकी अलायंस हमारी होनी ज़रूरी है. उसके अलावा जो एमपी जनाब इसी कैंपेन के लिए उनको सब फंड चाहिए होंगे, सपोर्ट चाहिए, डोनेशन चाहिए, उसमें हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए कि इस मफाद में कि हमारी कौम को फ़ायदा पहुँचे, हमारे जो राइट्स हैं उनको महफूज किया जाए. ज़रूरी नहीं है कि मुसलमान ही होगा तो वो हमारी खिदमत करेगा. ये अंग्रेज़ लोग भी जब भी उनकी मदद करेंगे तो ये इंशाल्लाह मुश्किल वक्त में आपको याद रखेंगे और डिलीवर करेंगे. हमारे जो यहूदी भाई हैं ना वो क्या करते हैं कि ईच एमपी को 5,000 की डोनेशन करते हैं और 100 एमपी जो है उनको डोनेट करते हैं, और बाद में उनसे अपने लेजिस्लेशन, अपने मज़हब के लिए, अपने फ़ायदे के लिए वो पार्लियामेंट में अपने कानून पास करा लेते हैं. हमारे यहाँ ऐसा रहा है कि हम चाहते हैं कि मैं ही काउंसलर बनूँ, मैं ही एमपी बनूँ, मैं ही वहाँ पर जाकर सभी लेजिस्लेशन पास करूँ. ऐसे कभी होता ही नहीं, ज़िंदगी में मौका किसी को नहीं मिलता. सो वी नीड टू, दिस इज less cost effective and better way to do things. So alhamdulillah we need to work towards that way.
भाई अकबर साहब आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया आप बड़े अच्छे नज़रियात रखते हैं कि और आपने एक बड़ी अच्छी बात की है कि पाकिस्तान की सियासत में जो है मुतहर्रिक होने के बजाय ये चूँकि हमारा मुल्क है ये हमारा मस्कन है और मैं हमेशा कहा करता हूँ कि मोमन के जहाँ की आदत नहीं है मोमन का मकाम हर कहीं है चूँकि इस मुल्क में रह रहे हैं हमारे मसाइल यहाँ हैं तो यहाँ की सियासत में हमें मुतहर्रिक होना चाहिए कुछ और फरमाना चाहेंगे अकबर साहब चले गए हैं बरकफ जी साहब जो अकबर साहब ने बोला है ना ऐसे ही हमें करना चाहिए बिकॉज हमारी अब कब्रें भी इधर ही हैं बहुत खूब और खुदा कब्रों को अभी हमसे दूर रखे और हमें उम्र खिज़र दे और खुदा उम्र खिज़र दे हमारे भाई मोहम्मद शोएब ज़हरी साहब को जो कि हमारे साबका मार्केटिंग डायरेक्टर थे ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक हैं मेरी जानब से उन्हें और भाभी साहिबा को मोहब्बाना सलाम और देखते हैं और सुनते हैं कोई शख्सियत और लाइन पे अस्सलाम वालेकुम कॉलर कौन और कहाँ से अस्सलाम वालेकुम कॉलर कौन और कहाँ से प्लीज मुझसे नाराज ना होइए अस्सलाम वालेकुम कॉलर नाराज हो गए हैं चलो सामीन और नाज़रीन अज़ीज़ वकार जो शख्स और या बहन भाई फ़ोन कर रहे थे मैं उनसे दोबारा गुजारिश करता हूँ कि फ़ोन लाने की कोशिश करें तकनीकी मामलात और मसाइल राह में हायल हो जाते हैं लेकिन हमें हिम्मत करनी चाहिए और जैसा कि अकबर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि यहाँ जो अपना वोट है वो ज़ाया नहीं करना चाहिए और अगर आप डोनेट नहीं कर सकते अगर आप चंदा नहीं दे सकते तो सबसे बड़ा चंदा ये है कि उस पार्टी के मेंबर बने और उनके लिए आप कैनवसिंग करें और साबिर साहब ने भी बड़ी अच्छी बात की है कि हमारे जो इस मुल्क के यहूदी बहन भाई हैं वो अपनी कम्युनिटी के मफादात को महफूज रखने के लिए हर एमपी के कैंपेन में हिस्सा लेते हैं और उनके कैंपेन फंड्स में भी हिस्सा देते हैं Chaudhry Sahab, just come on to the few of the things that need to be discussed. As far as the UKIP concerned, what their views are in their manifesto about the burqa, this is only a start of it. As soon as they gain more power and everything, they will come on to halal food, and furthermore, they will come on to circumcisions. They will say that's torturing, and where does that leave for Muslims? So we need to be proactive and we need to stand and we need to come out and use the vote properly and also we need to lobby ourselves in the right direction for future. We need to have a structure in the place that we can be seen and heard. चौधरी साहब आप ये कह रहे हैं कि वो हलाल जो हमारी ग़िज़ा है उस सिलसिले में मुखालफत करेंगे और जो खतना है उस सिलसिले में भी मुखालफत करेंगे इस बात का इम्कान है डेफिनेटली बिकॉज अभी तो बुर्का का शान निकाब का या उसका तो स्टार्ट है इनका ये इनके और मुज़ाहिम आएंगे हलाल फूड जैसे कि जो दूसरे ना ब्रिंट फेस्ट हलाल फूड स्लॉटर हाउस में वो गए थे उन्होंने क्या तबाही मचाई थी वहाँ पे लेकिन ये जो हलाल खाना है हमारे यहूदी बहन भाई भी हजार 1,500 2,000 साल से वो जो है जानवरों को ज़बह करते हैं और उनका भी खतना होता है तो ये मुसलमानों की क्यों अभी उन्हीं की वजह से हमें ये सहूलतें मिली हुई हैं जब ये पावर में आ जाएंगे ना वो इस लाइसेंस इशू करेंगे जैसे इंडिया में हो रहा है अगर उन्होंने यहूदियों के लिए लाइसेंस इशू कर दिया आप करते हैं और मुसलमानों के लिए लाइसेंस नहीं इशू करते तो क्या करेंगे आप भाई आप ये बड़ी फिक्र अंगेज बातें कर रहे हैं और मुझे भी परेशान कर दिया और मेरे नाज़रीन और सामीन को भी चौधरी साहब इस्लाम ने इस मुल्क में रहना है लेकिन हमें जाग के रहना है होशियार होकर रहना है कि हमारे पास वसाइल तालीम तरबियत हर चीज़ है लेकिन सुस्ती हमें तबाह बर्बाद कर रही है यानी आप कह रहे हैं कि हमारे जो सामने आने वाले खतरात हैं उनसे आगाह रहना बहुत ही ज़रूरी है सो सामीन ज़ीवकार और नाज़रीन ज़ीवकार आपने गुफ्तगू सुनी समाअत फरमाई और आपने देखा भी है यकीनन मैं समझता हूँ कि अगर आप फेसबुक देख रहे हैं चौधरी मोहम्मद साबिर साहब को वो कह रहे हैं कि ये जो निकाब पे पाबंदी है और बुरके पे इसके बाद यूकिप वाले और दूसरी जमातों वाले वो मुसलमानों की ग़िज़ा के सिलसिले में हलाल खानों के
सिलसिले में भी रुकावटें डालेंगे और बच्चों के खतने के सिलसिले में भी कहेंगे कि ये तो जुल्म है, सितम है और बर्बरियत है. अगर आप इस सिलसिले में राय रखते हैं, आप अशफाक यानी साहब की तरह फ़ोन कर सकते हैं या अकबर साहब की तरह फ़ोन कर सकते हैं. और मेरा प्रोग्राम जो है मैं एक ही कॉल लूँगा. अगर आप मैं देखता हूँ वो कौन खुशकिस्मत शख्स है या बहन है जो मुझे फ़ोन करती है और मुझे ये एजाज़ बख्शती है या बख्शता है. और अगर आप फ़ोन करना चाहते हैं तो अगले 3 मिनट के अंदर अंदर आप फ़ोन कर सकते हैं. 8 बजे ख़बरें होंगी और ख़बरों के बाद प्रोग्राम होगा द रिवाइवल शो विद द वन एंड ओनली मतलूब अली खान, द हिस्ट्री मैन. सामीन और नाज़रीन इज़ीवकार, आप जहाँ कहीं भी रहते हों, अपने माहौल से, अपने मुल्की हालात से, अपनी सियासत से, अपने जो दरपेश आने वाले मामलात और मसाइल हैं, मसाइल्स नहीं मसाइल हैं, उनसे आगाह रहना बहुत ही ज़रूरी होता है. और आइंदा आने वाले मसाइल की और मौजूदा मसाइल की और गुज़श्ता मसाइल की गुफ्तगू फरमाते हैं ऐसा अंदाज में, बड़े अच्छे तरीके से हमारे चौधरी मोहम्मद साबिर साहब. और वो कह रहे हैं कि हमें अब तो मसाइल दरपेश हैं, लेकिन आइंदा हमें ज़्यादा मसाइल दरपेश आ सकते हैं, बिलखसूस अगर ये निकाब वाली जो सूरत हाल है और निकाब वाली पाबंदी है अगर वो कामयाब होगी. जी देखो, यूकिप ने जो पहले मैनिफेस्टो में ये रख दिया है. दूसरा है कि जैसे मैंने बिगनिंग में कहा था कि यूकिप जो है बीएनपी सूट्स में चल रही है, ऐसे ही है ना, फार राइट उसमें मुलव्वस है. जो ब्रिटेन फेस्ट है उसने हलाल दुकानों पे जो कि जाके उन्होंने किया है, जैसे रेस्टोरेंट में किया है, उसको मैनिपुलेट करते हैं. ये हलाल जो है ये ज़कात देता है, टेररिज्म प्रमोट करता है. सो इसमें बंद होना चाहिए. दे विल penetrate inside the far right parties, and then obviously once they're in power it's going to be difficult because Hitler एक बार पावर में आया था, उसके बाद इलेक्शन भी नहीं हुए थे जर्मनी में. ये दुरुस्त है और ये बातें बड़ी खौफनाक तस्वीर और मंजर पेश कर रही हैं. सामीन और नाज़रीन अज़ीज़कार, मैं अब कोई किसी से कॉल नहीं लूँगा, लेकिन अगर आप टेक्स्ट करना चाहते हैं या फेसबुक पे कोई तबसरा करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं. मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप मेरे प्रोग्राम की तारीफ़ करना चाहते हैं, तनकीद करना चाहते हैं, तायद तबसरा या तज़किरा, तो यानी ते तो उसके लिए आपके पास बहुत से आलात हैं. एक तो फेसबुक है, दूसरा टेक्स्ट है, फिर व्हाट्सएप है, या उस सबसे बेहतरीन टेलीफोन है. और टेलीफोन का नंबर मैं अब नहीं दोहराऊंगा, लेकिन अगले हफ्ता इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो वो दोहराऊंगा. लिहाजा आप जो है मुतहर्रिक हूँ सियासी तौर पे, जैसा कि चौधरी साहब फरमा रहे हैं, और मैं चौधरी साहब के पास दोबारा जाऊँगा और उन्हें मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप फरमाएं कि हमारे लोगों को सियासी तौर पे मुतहर्रिक होने के अलावा और क्या-क्या बातें करनी चाहिए ताकि ये जो नस्ल परस्ती है और ये जो मुतासबाना रवशें हैं या रजनात हैं, इनका मुकाबला कैसे मुमकिन है. यानी हर चीज़ जो है वो हमें इससे मायूस नहीं होना चाहिए. हालात को बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए? नहीं, इस्लाम जो है वो हमेशा के लिए है, वो तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन मुसलमानों को दरपेश आएंगी जब वो इस्लाम से हट जाएंगे. हमें चाहिए कि अपने दीन कुरान और हदीस पर आ जाएं, अपने इखलास से लोगों से प्यार मोहब्बत जो सूफिया किराम का नज़रिया था उस पर आ जाएं, खिदमत खल्क में आ जाएं, और stay away from the crime and crime, and also we need to be very active in every field and be very transparent and honest all the time. बड़ा हसीन इंतज़ाज है आपने किया अंग्रेज़ी और उर्दू का कि stay away from crime and crime. और सामीन इज़ीवकार और नाज़रीन इज़ीवकार, मैं चौधरी मोहम्मद साबिर के यही खूबसूरत अल्फाज, चूँकि जो इनका मुखलसाना
मशवरा है वो यही है कि आप जराइम और बुरी आदत से जो है इज्तनाब करें और अपनी कम्युनिटी के लिए वो काम करें जिनसे इस्लाम की तबलीग हो, इस्लाम फ़रोग़ पाए और अपनी कम्युनिटी फ़रोग़ पाए। और ये जो दाएं बाजू की जमातें हैं इनको ऐसा मौका ना दें कि वो हमारी कम्युनिटी को बदनाम कर सकें। एक तो है मुतहिद रहें, मुनज़्ज़म रहें और सियासी तौर पे सरगर्म होने चाहिए। और चौधरी साहब से मैं आखिर में पूछूंगा कि ये जो फलाई काम है, मसलन मैं अपनी जमात की बात करूंगा और बहुत सी और तंजीमें रादर में काम कर रही हैं, यानी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो आपकी मस्जिद है उसमें यानी इस्लाम को फ़रोग़ देने के सिलसिले में भी खिदमत कर रहे हैं और बड़ी उम्दा आपने मस्जिद बनाई है। लेकिन ये बताइए कि आरफिड जैसे ये हमने तंजीम बनाई है जिसके ज़रिए हम बैनुल मज़हबी जो तलक़ात हैं उसे फ़रोग़ दे सकें, क्या ऐसी जो तंजीमें उनका कोई मुकाम है माशरे में? डेफिनेटली मैंने तो आपकी तंजीम से कुछ सीखा है। इसी हफ्ते को एक दिन रात में मुझे काम करना पड़ा टेक वे में, अमूमन तो मैं काम नहीं करता। एक स्याह रंग का होमलेस आदमी आया और कहने लगा भाई मैं होमलेस हूँ, मुझे खाने के लिए एक चिकन दे दो। मैंने उसको अंदर ले गया और बच्चे से कहा यार 2 चिकन डालो और कुछ आलू डाल दो इसमें, और उसके बाद मैंने बोला कि पानी भी दे दो। लेकिन दैट हैज़ आई लर्न फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन, हमें अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया हुआ है, जिसके पास कुछ नहीं है उसको देना चाहिए। बहुत खूब चौधरी साहब, ये आपकी बड़ी इज्जत अफजाई है कि आप कह रहे हैं कि आपने बहुत कुछ सीखा है, बल्कि हमने आपसे भी बहुत कुछ सीखा है मसलन। और मैं दुआ करता हूँ कि और भी जो मसाजिद की इंतज़ामिया कमेटी हैं वो आपसे सीखें, चूँकि आप जिस इलाका में रहते हैं वहाँ मस्जिद जो आपकी थी अबू बकर मस्जिद, वो उसे शहीद करके आपने नई मस्जिद बनाई है और उसमें बहुत ही इनकलाबी काम कर रहे हैं। सो अल्लाह आपको इसका अजर दे। सब असली बात बताऊं, जो मस्जिद का काम हुआ ना, इसमें अल्लाह ताला की तौफीक अल्लाह ताला ने दी है, उसकी फजल व करम से हुआ और दूसरा कम्युनिटी के साथ से हुआ है और बुज़ुर्गों का बहुत इसमें हमें दुआ और हम हिमायत मिली है। लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि कोई बच्चा ना उससे बाहर रहे और कोई बुज़ुर्ग उससे बाहर ना रहे, उसका हिस्सा बने। ये इस कोशिश की वजह से अल्लाह ताला ने हमें उस मस्जिद को तकमील पर पहुँचाने में आसानी मिली और सबकी खुशी, और अल्लाह ताला ने हमें एक सुकून पैदा किया। मेरी कोशिश ये थी कि हम सबसे पहले हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, इत्फाक करना है और एक अच्छे अखलाक से आगे चलना है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने हमें खुशियाँ अता की और उसके बदले में हमारी अच्छी मस्जिद भी नसीब अता कराई अल्लाह ताला ने। यकीनन आपने अल्लाह ताला की खुशनूदी इसमें हासिल कर ली है और खुशनूद की शक्ल में भी आपने जो है खुशनूदी हासिल कर ली है। खुदा आपको अजर अज़ीम दे, जज़ाए खैर। बहुत बहुत शुक्रिया आपके ख्यालात का, आपके नज़रियात का, आपके वक्त का, और मैं तवक्को रखता हूँ कि आप इसी तरह हमें महसूस फरमाते रहेंगे, मुस्तफ़ीद फरमाते रहेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने साथ दिया तो उसकी तौफीक से इंशाल्लाह आपके यहाँ हाज़िर रहूँगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने बेटों आपने बासलाहियत बेटों को भी मेरा सलाम अर्ज़ कर दीजिएगा। जी नवाज़िश, बहुत बहुत शुक्रिया। सामीन और नाज़रीन अज़ीज़ वक़ार, ये थे हमारे भाई चौधरी मोहम्मद साबिर साहब जो कि सेक्रेटरी हैं अबू बकर मॉस्क, अबू बकर मस्जिद ईस्टवुड रॉदरम के। एक कारोबारी शख्सियत भी हैं, समाजी कारकुन हैं और बहुत से तहरीकों में भी मैं पिछले 35-40 बरसों से इन्हें जानता हूँ। अच्छे ख़ानदान के हैं, अच्छे नफीस के हालात रखते हैं और दाई हैं बैनुल मज़हब, दोस्ती के बैनुल मज़हब ताल्लुकात के। और अगरचे जो हमारे मसाइल हैं उन पे वो बड़ी अच्छी राय रखते हैं और इख्तलाफ भी रखते हैं सियासी, लेकिन जो इस मुल्क में खूबियाँ हैं उनका भी एतराफ़ करते हैं। सामीन और नाज़रीन अज़ीज़ वक़ार, रेडियो ईमान जैसा कि मैंने कहा है कि उसका किसी सियासी जमात से इल्हाक या किसी सियासी जमात को हम फ़रोग़ नहीं दे रहे। हम सिर्फ़ इस बात को फ़रोग़ दे रहे हैं कि आप अपने वोट का इस्तेमाल करें और ये मुल्क जो है इसमें अख़ुव्वत हो, प्यार हो, अमन हो,
भाई चारा हो यानी अखुवत हो और बर्दाश्त हो रवादारी हो और सबसे ऊपर यहाँ जो है वो मिली यकजहती हो यानी कम्युनिटी कोहेजन हो मेरे प्रोग्राम के बाद रिवाइवल शो हो रहा है विद द वन एंड ओनली सूफी मतलूब अली खान जी हाँ मैं उन्हें सूफी कहूँगा और द हिस्ट्री मैन सूफी मतलूब अली खान सामीन ज़ीवकार अल्लाह आपको शाद रखे आबाद रखे गमों से आज़ाद रखे मेरे लिए दुआ कीजिएगा और मैं आपके लिए दुआ करूँगा मुलाकात होगी अगले हफ्ते इंशाअल्लाह बाफ़ज़ल खुदा